So if you have any questions, you can ask. I see Umar, you have a raised hand. Yes. Do you have a question? You can unmute yourselves, by the way. Yeah, thank you. So, sir, my question is: you gave example of that car accident, the friend who got escaped in it. So I want to know that how unconscious mind guide us in such situation, right? Also, multiple time it happens with us that that when we are in a class and we have to give answer, but we are not sure if it is correct or not, but we have a gut feeling that your answer is right. So how that gut feeling actually works? Okay, Umar, दो क्वेश्चन है आपके. Okay. पहला जो क्वेश्चन है अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, one of the things that I often say is that unconscious mind is like Citibank. आपके याद है Citibank जो थे, they had a logo, a slogan, and it was that city never sleeps. So it's your conscious mind that sleeps. Your unconscious never sleeps. Okay, even जब आप सो रहे होते हैं, आपकी बॉडी के वो तमाम functions, for example, breathing, it just keeps on happening. Okay, digestion, it just keeps on happening. Blood circulation, it just keeps on happening. Heart beating, it keeps on happening. So unconscious mind keeps on working even when you are not awake. So unconscious mind never sleeps. Now, जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका ताल्लुक मेनली सिल्वा अल्ट्रा माइंड की जो ट्रेनिंग है उससे है. I don't teach that course anymore. I used to teach that course. Merabaji does that. So, but I'll because since you're asking, I'll answer it the way that I used to answer in my silver classes. देखो हमारा जो brain है, it can do a lot of things. जैसे हमारा जो मोबाइल है, हमारा मोबाइल जो है इंफॉर्मेशन को रिट्रीव भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सेंड भी कर सकता है. ओके, और ये जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव और सेंडिंग हो रही है, ये वेव्स की फॉर्म में हो रही है, रेडिएशंस की फॉर्म में हो रही है. ओके, हमारा जो ब्रेन है, इनफैक्ट जिसे हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ सिक्स्थ सेंस. जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे इन्हीं 5 सेंसेस से आ रही है. We say, oh, I had this vision, that's sense of sight. I had this internal voice, that's my sense of hearing. I had this gut feeling, that's my sense of touch, the kinesthetic. Okay, so it's not a sixth sense, it's the information coming through those senses. हमारा brain जो काम करता है, it does multiple things. हमारा brain वो information जो कि पहले से उसके ऊपर impressed है, उसको retrieve करता है. इसे हम memory कहते हैं. जब हम सुबह उठते हैं, हमें कैसे पता ये हमारा घर है, ये हमारे घर वाले हैं? Because we have memories that tell us. How do we know who we are? Because we have memories that tell us. Okay, so हमारा brain वो information जो already impressed है उसको retrieve करता है. That's one thing. दूसरा काम हमारा brain ये करता है कि वो information जो किसी दूसरे शख्स के जहन पे impressed है उसको retrieve कर लेता है. कभी अगर आपके साथ ऐसे experience हुआ हो कि आपका कोई बहुत अच्छा friend है, उससे बात होते हुए, sometimes couples में ऐसा होता है कि आप कह रहे हैं और वो कहता है अभी यही बात तुमने मेरे मुंह की इस बात छीन ली. ओके, या कभी ऐसा होता है कि वो कहता है और आप कहते हैं यार अभी बिल्कुल यही बात मेरे जहन में, अभी मेरी बात तुमने मुंह की छीन ली. ओके, सो इट्स लाइक बिकॉज उस वक्त आपका और उसका जहन जो है सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा होता है. और हम इनफैक्ट एक चीज यूज करते हैं, हम कहते हैं यार मेरी उससे बड़ी फ्रीक्वेंसी बड़ी मैच करती है. ओके, हमारा जो जहन है उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा होता है जो किसी दूसरे के जहन पर है. जब हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जो है, लिटरली ब्रेन फ्रीक्वेंसीज जब मैच कर रही होती है, जब हम हिप्नोसिस के सेक्शन में आएंगे, आई विल टॉक अबाउट दोस ब्रेन फ्रीक्वेंसीज. एंड स्पेसिफिकली उमर, आपने एंड इरम एंड जवेरिया, आप लोगों ने हिप्नोसिस ट्रेनिंग मेरे पास की हुई है, एंड यू रिमेंबर द ब्रेन फ्रीक्वेंसीज चार्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे. So it's like when your brain is operating at certain frequencies, same frequencies, you start retrieving that information. That's the second thing. थर्ड चीज जो हमारा जहन करता है वो ये, अच्छा अब अगर जो दोस्त है या जिसके साथ करे उसके साथ तो हम किसी ना किसी सेंस पे कनेक्शन है ना, बट देयर इज दिस थिंग, द थर्ड थिंग दैट द ब्रेन डज इज वो इंफॉर्मेशन जो हमारी सेंसेस में कहीं भी नहीं है,
उसको वो रिट्रीव कर लेता है। इसको हम इंट्यूशन कहते हैं। ओके, सो हम यहाँ बैठे हुए और हमें ख्याल है यार आज फलाने रास्ते से नहीं जाना चाहिए। I have no connection, but I have this. So my brain is like retrieving that information. हम जब छोटे थे पाकिस्तान में उस जमाने में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 1980s की, ओके, अर्ली 80s मिड 80s, तो उस जमाने में पाकिस्तान में एक ट्रेंड चला था। और वो क्या था कि जी लोग घरों में बड़े बड़े एंटेना लगाते थे, 30-30 फुट के एंटेना लगाते थे, और एंटेना के ऊपर प्लेटें और पतीले और पता नहीं क्या कुछ करते थे। और वो एंटेना को यूं घुमाते थे, इस तरफ करो तो ओमान आता है, तो इस तरफ करो तो वो दूरदर्शन आने लगता है इंडिया का, और उस तरफ करो तो कुवैत का चैनल आने लगता है। और लोगों ने बड़े बड़े बूस्टर्स लगाए हुए होते थे अपने घरों में। तो अब ये जो चीज होती थी हमारे घर में, ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, हमने भी इसी तरह से एक बूस्टर लगाया था। एक दिन मैं अपने लाइक एंटीना का, और होता ये था कि एक छत पे चढ़ा हुआ है वो उसको घुमा रहा है, और एक नीचे खड़ा हुआ है कह रहा है हाँ बस थोड़ा थोड़ा आगे आगे इट्स लाइक, और कोई घर में वो ट्यूनिंग उसकी करता होता था। तो एक दिन आई वाज डूइंग दैट, और मेरे घर के टीवी पे उस जमाने में ईगल स्क्वाड हुआ करती थी पाकिस्तान में, जो मोबाइल थी। ईगल स्क्वाड खत्म हो गई आई थिंक। तो बट वो इट्स लाइक पुलिस की एक वो होती थी नफरी, जो ईगल स्क्वाड कहलाती थी। तो ईगल स्क्वाड की एक गाड़ी गुजर रही थी, पुलिस वैन, पुलिस मोबाइल, ओके। और उसकी जो वायरलेस पे जो भी कम्युनिकेशन चल रही थी, माय टेलीविजन स्टार्टेड कैचिंग दैट। क्या हुआ कि वो एंटेना घुमाते हुए वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो उसको उसने कैच करना शुरू कर दिया। इसी तरह जिस वक्त ये मोबाइल्स नए नए आए थे, जीएसएम टेक्नोलॉजी होती थी, तो उसमें एरिक्सन के मोबाइल्स होते थे। उन एरिक्सन के जो मोबाइल्स थे उनके अंदर एक चीज ये थी कि आप अपने घर का, आपके पास अगर जैसे टेप रिकॉर्डर है उसमें आप अगर एफएम लगाएं, तो वो एफएम की एक फ्रीक्वेंसी पे आके कोई अगर किसी का लाइक मोबाइल पे लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी जो कॉन्वर्जेशन है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका टेप रिकॉर्डर कैच करना शुरू कर देता, या रेडियो कैच करना शुरू कर देता था एफएम के ऊपर। ओके, ये हो क्या रहा है कि जो इंफॉर्मेशन है वो एक स्पेसिफिक इट्स लाइक वेव की फॉर्म में जा रही है, और जब कोई इक्विपमेंट उस पे ट्यून होता है तो वो उस उन वेव्स को, वो उस इंफॉर्मेशन को कैच करने लगता है। हमारा ब्रेन इसी तरह से, अब एक इंफॉर्मेशन है कि कोई चीज होने वाली है या कोई चीज हो रही है, उसको हमारा ब्रेन जो है एक खास फ्रीक्वेंसी पे अनकॉन्शियसली उसको कैच करने लगता है। और जब उसको कैच करता है तो हम कहते हैं ओ, आई हैड दिस गट फीलिंग, आई हैड दिस इंट्यूशन। जो ट्रेनिंग होती है, जैसे सिल्वा की जो ट्रेनिंग होती है, उसका बेसिक आइडिया यही होता है कि आपके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आप उस चीज को डेलिबरेटली कर सकें। यानी होजे सिल्वा की जो रिसर्च थी वो इस चीज पे, ही सेड इट्स नॉट समथिंग दैट सम पीपल हैव एंड सम पीपल डोंट, इट्स समथिंग दैट सम पीपल हैव इट नेचुरली डेवलप्ड एंड सम पीपल कैन डेवलप इट थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। ओके, so it's like, so that's how people have these कोई चीज होने वाली है and they have this gut feeling and then they have an experience. I hope it answers your question. Okay, anything else? Sir, I wanted to ask Sir. something. एक मिनट, शिवा का एक क्वेश्चन है, how can we explain the concept of dreams, especially dreams that come true? शिवा, there are multiple ways of explaining it. एक चीज है religiously, okay, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा जो हमें बताया कि सच्चे ख्वाब जो हैं नबूवत के 46वें हिस्सों में से हैं, ठीक है। ख्वाब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ख्वाब, and I've been learning, studying this, the interpretation of dreams since 2005, I think. I dream a lot of dreams, by the way. So this is one of the things I do every morning, almost every morning. It's like I dream and then I see the interpretations, but not with the intention of interpreting dreams, but with the intention of understanding what a symbol means. तो बहरहाल, तो ड्रीम्स जो हैं 3 किस्म के होते हैं। एक वो ड्रीम्स होते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की चीज़ों हो रही हैं, और मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम आने वाला है, अब बच्चा अपने आप को एग्ज़ाम में देख रहा है कि वो लेट हो गया, या उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया, या समथिंग अराउंड दैट, या कोई इंटरव्यू के लिए जाना है तो वो देख रहा है अपने आप को इंटरव्यू में जा रहा है और इंटरव्यू ख़राब हो गया। सो थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, इन ड्रीम्स की कोई इंटरप्रिटेशंस नहीं होती। सेकंड ड्रीम्स वो होते हैं जो जो गंदे ख्वाब के, जिसमें डरावने ख्वाब भी हो गए, या जो एहतलाम हो गया, या इस किस्म के जो
ख्वाब होते हैं, इनकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ये शैतान की तरफ से होते हैं, इनको किसी से शेयर भी नहीं करना चाहिए। ओके, अगर कभी कोई ऐसे बुरे ख्वाब देखें, उसको लाहौल पढ़ के अपनी करवट चेंज करके अपनी लेफ्ट साइड पे 3 बार थूक कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के अपनी लेफ्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता थुतकार के देन स्लीप। ओके, तीसरे जो ख्वाब होते हैं जिसे सच्चे ख्वाब कहते हैं, इनकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। ओके, नाउ साइकोलॉजी में अगर इफ यू रीड जो फ्रॉइड ने जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन दिए, उसने इन दोनों की इंटरप्रिटेशन है, अपने बुरे ख्वाबों के भी, इंसेस्ट के ख्वाबों के भी वो इंटरप्रिटेशन बताते हैं, और इट्स लाइक हर तरह के ख्वाबों की। तो दीन में जो इन ख्वाबों की इंटरप्रिटेशंस का है, एंड आई एम नॉट एन आलिम दीन बाय द वे, सिंस आपने पूछा है तो आई एम ट्राइंग टू आंसर दैट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। ये जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ये उन ख्वाबों की इंटरप्रिटेशंस में बहुत सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। ओके, किसने ख्वाब देखा, कोई कोई हाकिम था या महकूम था, कोई अमीर था या गरीब था, सेहतमंद था या बीमार था। ख्वाब देखने वाले ने रात को कोई खाना जो है कोई मसालेदार खाया था या कोई नॉर्मल खाना खाया था। अब अगर फर्ज करें किसी ने ख्वाब में देखा है कि जी हर तरफ आग लगी हुई है, और लेकिन उसने रात को जो खाना खाया था वो मिर्चें खाई थी, तो वो उस ख्वाब की इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। ओके, इसी तरह कोई कोई शख्स है, उसने ख्वाब, इवन ख्वाब में अगर फर्ज करें किसी ने आग देखी है, तो आग जो है सर्दियों में देखने के माने अलग होंगे और गर्मियों में देखने के अलग होंगे। एक अमीर आदमी ने देखा है तो उसके अलग होंगे, एक गरीब आदमी ने देखा है तो उसके अलग होंगे। सो व्हेन इट कम्स टू इंटरप्रिटेशन, दिस इज अ टोटली डिफरेंट साइंस। ओके, इसमें देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी हैव टू सी बिफोर वी कैन कम अप विद एनी इंटरप्रिटेशंस। सो इट्स लाइक ड्रीम्स दैट कम ट्रू, उनकी क्या इंटरप्रिटेशंस होंगी, कैसे होंगी? Yeah, so Ibn Sirin has मैंने इब्न सीरीन की जो बुक्स हैं वो भी हैं, there are number of different books I've read about this, और लेकिन इब्न सीरीन has some really fine interpretations। आज के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ख्वाब में देखेंगे जिसकी इब्न सीरीन के पास आपको so मिसाल के तौर पे हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, ओके, हवाई जहाज़ की तरह आप उड़ रहे हैं हवा में, so you may have different ways of defining them। मैंने उनका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कई चीज़ें जो हैं बहुत सिमिलर है, स्ट्राइकिंगली सिमिलर है, कई चीज़ें जो है ना लाइक आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, बट इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स हैज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। इट्स नॉट समथिंग दैट कि हम फौरी तौर पे किसी को इंटरप्रेट कर सकें, बट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम NLP पर्सपेक्टिव कि दिस इज लाइक the unconscious mind giving us some information which is there in form of some waves, some radiations। मैं खाली समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ कि देखिए, जब अल्लाह ताला जो अहकामात नाजिल फरमाता है, जो लैलतुल क़द्र में जी एक पत्ता जो झड़ने के भी वो अहकामात जो है वो आते हैं कि किसने आना है और किसने जाना है, जो अहकामात ऊपर से नाजिल होते हैं, और जिनके बारे में आता है कि जो शयातीन जिन्नात थे वो उनको चुक लिया करते थे और जाके वो काहिनों के दिल में इल्का करते थे, और काहिन जो उसमें बड़ा चढ़ा के बताया करते थे और अभी भी करते हैं। तो वो जो अहकामात अल्लाह ताला के नाजिल होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तो वो जो अहकामात नाजिल होते हैं वो जिस फॉर्म में भी नाजिल होते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है किस फॉर्म में होते हैं। मैं एक खाली अपने ख्याल से बात कह रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत क्या है, लेकिन लाइक मे बी किसी किस्म की फॉर्म वेव्स और रेडिएशंस की फॉर्म में होते हैं, लिखी हुई किताब की फॉर्म में तो नहीं आ रहे होते हैं। और इंसान के जहन को, ये जो अशरफुल मखलूक़ात जिसको अल्लाह ने बनाया है, ये सलाहियत है कि वो उसको वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक प्रॉबली एक्सेस कर पाता है, और वो चीज़ हमें ख्वाब में, तो एक चीज़ जो कि होने वाली है, जो कि हमारे लिए फ्यूचर है, लेकिन अल्लाह के यहाँ लिखी हुई है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात एक दफ़ा मैंने कहीं पढ़ी थी, यानी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है दिस लाइक एक फिल्म है जो पहले से बनी हुई है, हम खाली उस फिल्म को देख रहे हैं, तो वो इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। यानी जैसे हम सिनेमा में या हम टीवी पे कोई फिल्म देख रहे हैं, तो वो फिल्म जो है वो तो पहले पता नहीं कब की रिकॉर्डेड है, हम आज देख रहे हैं तो वो सीन्स हमारे सामने आ जा रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए नई है क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन वो फिल्म पहली बार नहीं है, वो फिल्म तो पता नहीं कब की बनी हुई। तो वो इंफॉर्मेशन जो है इंसान जब रिट्रीव कर लेता है
और वो रिट्रीव करके उसको करेक्टली वो जो कुछ होने वाला है उसको रिट्रीव कर लेता है, और जब वो होता है तो उसको लगता है कि मेरा ख्वाब सच्चा हो गया, ओके, या मेरी इंट्यूशन थी वो सच्ची हो गई। शिवा, एनएलपी में स्पेसिफिकली ड्रीम्स के ऊपर इस तरह से कोई सच नॉट इन माय नॉलेज। Deja vu के बारे में there are different people, there is no, I would say उलमाए psychology में इख्तिलाफ है, so there is no specific answer to this. Deja vu के बारे में there is no specific, not in my knowledge so far, मैंने जब तक जो कुछ पढ़ा था उसके बारे में, so different people have different interpretations and different theories on this. I don't know if how true and which one is true and which one is not. जी मुस्तफा, there was a point. Was Mustafa saying anything? No, you continue. I'll continue after you. All right. There was a point that conscious mind is a domain of languages. I didn't. I couldn't understand that. जो languages आप बोलती हैं, जो भी ज़बान आप बोलते हैं, जो भी that's something that you know consciously that you know. अच्छा सर, I needed to ask कि आपने एक ब्रेन के पार्ट को रेफर किया था जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अ गॉड गिफ्टेड थिंग और अ रिसोर्स ऑफ आवर माइंड? मगर हमें मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि गॉड गिफ्टेड थिंग होती है और किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, क्योंकि आई एम वीक इन मैथ्स और मेरे वन ऑफ द टीचर्स टोल्ड मी दैट कि तुम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकते। तो आई स्टार्टेड बिलीविंग ऑन दैट। तो क्या कहते हैं, कैन आई डेवलप दिस स्किल कि मैं कोई भी प्रॉब्लम को स्मार्टली कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको मैं सॉल्व कर सकूं? Absolutely. Okay, so and that's what we say in NLP. It's like NLP के हम लोग कल इंशाल्लाह ताला इस पे बात करेंगे। NLP के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल ये है that अगर एक शख्स एक काम कर सकता है, we can find how they do it and teach it to whoever wants to learn it. Okay, so okay, you actually told me in your communication exactly what the problem is. Yes, because once it happened was and you know what the problem is? You know what the problem is, Mustafa? Yes. Your teacher told you something and you believed it. Yes. The moment I realized that this is not true, when I was in grade 8, my teacher told me that you can't score good in maths. So my mother hired a tutor for me. She was she was very intellectual lady. So she started believing in me and teaching me mathematics. And there were finals in my school, and I scored 70 out of 75 for the first time. I scored an A in that final term. But unfortunately, that teacher went. उनकी शादी हो गई। तो जो मेरा पुराना वाला हाल था मैथमेटिक्स में, it continued in grade 9 and grade 01 and 02. So I think that I didn't decode it, that why I did well in that particular final term, and that was the problem. I was failing to find that way out कि मैं कैसे अच्छा एकदम से मैंने कर लिया, और फिर मेरा जो वही पुराना वाला जो मेरी क्या कहते हैं परफॉर्मेंस थी मैथ्स में वही कंटिन्यू हो गई। और मुझे ये अभी तक कहा जाता है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो बना ही नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, तुम कोई और सब्जेक्ट पढ़ो। Okay, so Mustafa, inshallah ta'ala we'll work on this. Thank you for sharing this, by the way. Okay, I'll not answer it here today directly, but inshallah you'll get this. Okay, this is just मैंने एक बात कही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे साथ देखो होता क्या है कि जब हम दुनिया में आते हैं हम टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसी पे, और फिर हम इट्स लाइक दूसरों की बात जो है उसको हम अपने ऊपर सवार करना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं। तो अब भाई जाहिर है टीचर कह रहे हैं तो गलत तो नहीं हो सकता। Okay, exactly. Okay, and so that is what happened with you.
rather than realizing it's their opinion. It's not a truth, it's their opinion. Yes. Okay. Thank you And so that much, doesn't sir. mean anything. Sure. Okay. And similarly, if the whole world has an opinion about you, that's their opinion. It will only have an impact on you as long as you allow that opinion to, as long as you believe that opinion to be true for you. If you stop believing on it, this is not true. Okay. Okay, I see there is a question here. I missed out what Sir Kamran was, where is that? Okay. Was saying it is something related to the language we speak, limited belief. Yeah, so Asba, अगर इसकी recording आप देखते हैं section की, and hear what Mustafa shared, he actually said this. He said, my teacher said this, and I started believing. Okay, हम लोग hypnosis पे आएंगे तो इंशाल्लाह you will understand, क्या चीज hypnosis होती है. मगर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, hypnosis is anything that you and I have accepted without question. Okay, so somebody said you cannot be good in maths, and you accepted that. You've been hypnotized into believing a limitation. Okay. सर मैंने अपने रिजल्ट्स पे बिलीव कर लिया कि ये ऐसे ही आएंगे, क्योंकि क्या हुआ कि एक पैटर्न हो गया, क्योंकि जब मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट की थी तो आई वाज गुड इन मैथ्स. मुस्तफा एक चीज आपको मैं बताऊं. Understand this. Your academic results do not say anything about how successful you can be and you will be in your life. They say nothing about how intelligent or not intelligent a person is. The only thing your academic results say is how close your answer was to the answer in your teacher's mind. Yes. If your answer matches the answer in your teacher's mind, you get good grades. If it doesn't match the answer in their mind, you don't get good grades. It's that simple. Okay, It doesn't define anything. And by the way, I'm an IBA dropout. Okay. तो सर मेरा भी IBA में इंग्लिश क्लियर हो गया था, मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हुआ था. एंड मैथमेटिक्स इतनी, उसकी एंट्री टेस्ट की इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मैंने बना ली थी. तो आई वाज लाइक मैं कर ही नहीं सकता. मैंने IBA में 5 साल पढ़ाए और 7 साल एडमिशन टेस्ट के लिए ट्राई किया था. Okay. 7 साल bachelor's. Oh yes, I failed in the aptitude tests for like 6 times. It was 7th attempt when I cleared. Sir, bachelor's or masters? मैंने evening campus में था, evening program में मैंने BCom के बाद किया था. तो I did my PGD. I cleared 22 out of 21 out of 22 courses. अब तो इतना अर्सा हो गया याद भी नहीं. But I cleared 21 out of 22 courses. Okay. Dropped out in the last course and never got an MBA degree. And right now you are successful. I've trained many IBA graduates and some teachers as well. आप सबको बताया करें मैं IBA ग्रेड हूँ. नहीं, मैं वो जिसको IBA ने निकाल दिया था. आज मैं IBA के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. मैं सालों से ये बात लोगों को बताता हूँ. So the thing is, it's like none of those things define what you can do or cannot do. Okay. Yeah. Thank you so much. Sure. So Asba has, I will have to leave. Sure, no problem. Our class is over. So when we come to this question answer, you can stay only if you have some questions, and if you want to leave, you can leave. No problem at all. Is there any other question? Because technically हमारा 3 घंटे की से ज़्यादा की class हो चुकी है, 3.5 घंटे हो चुके हैं. You know what? So इसलिए any other question? If there is no question, just a request. Sure. Just a small request. जी फरमाइए. Like, is it possible that because we have a 3-hour class, and to sit continuously for 3 hours, it's a bit difficult. And if you can give us a 10-minute break after the first hour. देखिए ना, आप मैं बता रहा हूँ, शिबा खड़े होकर you stretch like this, ऐसे करके हिले झुले and do anything you want. आपका कैमरा बंद है. And Sheba, let me tell you that sir also
does his weights while taking a class. So we can also do that. It's fine. Yeah. No, it's not just about stretching. Like someone may have to go to the bathroom, someone may have to, drink something or, Sure, do something, go ahead. That's why. Drink as much as you like. No problem. Okay, make it comfortable for you. No problem. Okay, I may not take a break because you will get breaks जब हम exercises के अंदर आ रहे होंगे, but I may not take a break every day के अभी यहाँ पे. इसी तरह जैसे किसी का नमाज का टाइम, अब देखो कोई लाहौर में है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई अमेरिका में है, तो हर एक के लिए टाइमिंग्स जो डिफरेंट है. आपके पास अगर नमाज का टाइम आता है किसी का and you want to go and say your prayers, do that first. You will get recordings, no problem. Okay. All right, sir. Thank you so much. My pleasure. It was a great session. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.